Good evening, students. As we were studying that the chapter of hereditary and evolutions, so in this chapter we have discussed so many points about the hereditary phase and evolution phase also. Okay, so in this chapter we have discussed so many crosses of Mendel's experiment, like we have done monohybrid cross, we have done dihybrid cross, we have also discussed the genotypic and phenotypic ratio. So many points we have discussed, and in last video we have also discussed the species and speciations. What is the meaning of species and what is the meaning of speciations? Okay, so now you have to give me the answers of what is the meaning of speciations in my personal WhatsApp after the completion of that class also. Okay, so the first point is that we have to discuss the natural selection, because in previous we have also studied so many laws has been given by different scientists. So the natural selection is an important task for those organisms which are generally makes own cell best fitted for the environment, and that time environment take the those human beings are called as natural selections. Okay, natural selections means that here is a so much and large ecosystem, and it means there is a surviving of different types of human beings, and here those human beings is a generally responsible to change own cell according to the climate are best suited for natural selection, and other will be emit out. Okay, so those human beings which are makes own cell a best fitted for the environment, they can survive easily, and others the rest are not survive easily, and that is considered as natural selections. Okay, so apart from that, in our world there is so much diversity in humans and also the plants and animals also. So coming to the next point, most of the scientists get together to get a different idea to classify those types of organisms in a different types of groups. So they make a proper classification, and after the preparation of classification they make this separate group of organism into the human beings, and some of the groups of into the animals, and some of the plants into the plants. So they divided into different types of groups. अगर humans है तो humans kingdom में, अगर plants है तो plant kingdom में, और अगर animals है तो animal kingdom में. So according to that we have to discuss that the classification is generally done by the great scientists, by which they have to make understand that the order should be in a proper way, otherwise we can not able to find any species comes in which kingdom. Okay, so that is a problem thing. So here classification means it is a system of arrangement of organism in a proper order. ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ऐसे ऑर्डर में उसको अरेंज करना इन अ प्रॉपर ऑर्डर. ऑर्डर विल बी प्रॉपर सो दैट we can easily identify those types of organisms, and they are called as best or classification. इसी को हम क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ह्यूमन बींग्स, किसी भी प्लांट्स के लिए और किसी भी एनिमल्स के लिए. बिकॉज विदाउट क्लासिफिकेशन वी आर अनेबल टू फाइंड आउट विच एनिमल्स बिलोंग्स टू विच किंगडम एंड विच प्लांट्स बिलोंग टू विच प्लांट किंगडम. ठीक है, ये सारे कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए क्लासिफिकेशन हैज बीन गिवन, सो दैट all the organisms, whether it is living, whether it is non-living, are classified on the basis of their nature, their body design and their differentiations also. Okay, so जब classification हुआ तो mostly coming to the next part, because we are studying that evolution phases, the most important, and there is a evolutions की बात करते हैं तो most important evolution जो है हमें देखने को मिला था humans में. Okay, so in humans the made-up of cells is a generally takes place, and we know that cell is the basic structural and functional unit of life. And after that cells maybe are two types on the basis of presence of nucleus, and they are already considered in the human beings. And cells are divided into two parts, the prokaryotics and eukaryotics. Prokaryotics means primitive, and eukaryotics means it is developed from the primitive cells are called eukaryotics. They have well developed body parts and well organelles also, and there is a lack of certain organelles. ठीक है, so there is a too much difference between prokaryotic and eukaryotic. ये बहुत पुराने थे, ancient थे. eukaryotic इन्हीं के developed part थे, modification part थे, जिसको हम eukaryotic कहते हैं. And after that eukaryotic cells is further divided into two parts. The first one is unicellular and second is multicellular. Unicellular, I again
telling you unicellular means those organisms which are self formed their own bodies by single cell are called unicellular. Multicellular organism means those organisms their body consists or possesses different types of cells are called multicellular organisms. ओके एग्जाम्पल की बात करते हैं यूनिसेलुलर लाइक पैरामीशियम लाइक अमीबा. मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो बहुत सारे एनिमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स आल्सो. ठीक है. नेक्स्ट coming to the next point, multicellular organisms are further divided into two steps which may be autotrophs and heterotrophs. What is the meaning of autotrophs and what is the meaning of heterotrophs? Autotrophs means those organisms may be plants or may be producer which can self make their food own self are called autotrophs, and generally autotrophs are called producers. Okay. And second, heterotrophs, and heterotrophs means those organisms which are directly dependent on the autotrophs to take in their food materials are called heterotrophs, and heterotrophs are called consumers. Okay, so it is called consumers. Most important point, autotrophs are those producers which can produce their things in the environment, and heterotrophs like human beings, we are the consumers, generally take the food material from the autotrophs or a plant. So we are the consumers, most important. Okay, so these are the classifications of human beings on the basis of their cells, on the basis of their cell structure type, on the basis of their mode of nutrition. Apart from that, we have to discuss that classification of human beings comes in the class of two types of organs. The organs may be homologous organs and analogous organs, because these two are the very important and interesting topic for the 10th board exam. So you have to focus two topic very carefully, because so many times the questions maybe arises that what is the difference between homologous organ and analogous organ. Okay, so first one here, what is the meaning of homologous organ? Generally, homologous organs means the origin is same. It means that they are originating from the same places बट इन अ डिफरेंट अपीयरेंसेस. लेकिन उनका जो अपीयरेंसेस होता है, जो दिखने का वे होता है, वो डिफरेंट होता है एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन आल्सो, और उनका जो फंक्शंस होता है वो भी डिफरेंट होता है. दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन. इसको हम होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं. एग्जांपल की बात करते हैं, फोर लिम्स ऑफ मैन एंड फ्रंट लेग ऑफ बुल. ठीक है, ये दोनों के ओरिजिन जो होते हैं इनके बुल से अलग होंगे और इनके भी ओरिजिन अलग होंगे, बट इनके अपीयरेंसेस अलग होंगे, इनके अपीयरेंसेस अलग होंगे, इनके फंक्शंस अलग होंगे, इनके फंक्शंस अलग होंगे. ठीक है, इनके लिए ये इनका ओरिजिन होगा, ह्यूमन बीइंग्स के लिए फोर लिम्स ये मैन का ओरिजिन होंगे. ठीक है, सो बट दे अपीयरेंसेस आर जनरली डिफरेंट एंड फंक्शन इज आल्सो डिफरेंट. दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एनालॉगस. एनालॉगस ऑर्गन्स मींस दे आर क्वाइट डिफरेंट इन अ फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स. इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, बट ओरिजिन जो होती है ना, ओरिजिन्स भी क्या होती है, वो भी डिफरेंट होती है. फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट एंड ओरिजिन इज आल्सो डिफरेंट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. लेकिन उनका जो फंक्शंस होता है वो एक ही होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट, विंग्स ऑफ इंसेक्ट. विंग्स ऑफ इंसेक्ट मतलब जो इंसेक्ट के विंग्स होते हैं या फिर बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं, दे बोथ डन द सेम टाइप्स ऑफ फंक्शन. दैट इज कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स. ओके, सो विंग्स ऑफ इंसेक्ट लिख लो, चाहे बटरफ्लाइज के विंग्स लिख लो, यानी विंग्स ऑफ बटरफ्लाइज both function as a same manner and they helps to fly, and that is the same function and it is called analogous organs. Okay, so in next phase we have to discuss the several topics, and we have to also discuss the fossils, and because today is our last topic of that chapter, and after that your chapter hereditary and evolution will be totally completed. So you have to keep a very carefully all the things. Okay, so in this we have to discuss that the next topic is fossils. What is the meaning of fossils? Generally we know that fossils means the dead and decaying parts which are generally found beneath the soil are called fossils. Okay, ऐसे parts चाहे वो प्लांट्स के हों, चाहे एनिमल्स के हों, या किसी के भी हों, वो काफी सालों तक एक सॉइल के अंदर वो दबते चले आते थे, और दबने के कारण दे हैव टू फॉर्म द लेयर वाइज लेयर एंड लेयर वाइज लेयर. बहुत सारे लेयर्स बना लिए, एंड दैट इज कॉल्ड द फॉसिल्स. एंड फॉसिल्स इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ह्यूमन लाइफ. ठीक है, ये ह्यूमंस लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज सो मेनी फॉसिल्स आर जनरली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सो मेनी थिंग्स फॉर द ह्यूमन बीइंग्स. ओके, फॉसिल्स का यूज बहुत सारे विलेजेस में भी बहुत जगह पे किया जाता है, फॉर एज अ कोक,
ठीक है, किसी चीज को जलाने के लिए, किसी चीज को, तो फॉसिल्स मे बी डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स or maybe animals, okay, which are get buried under the soil in a thousands of years and they formed as a fossils, okay, and after that the fossil formation takes place so many times, and this is the very important things for the human lives and it plays a very vital role in the humans daily life also, ठीक है। so fossils क्या होता है, I already told you that काफी सालों तक ड्यू टू द हीट एंड द प्रेशर इन द सॉइल दे बिकम वेरी हार्ड एंड दे गेट डिपोजिटेड ओवर बाय ओवर, ये एक दूसरे के ऊपर ये लेयर वाइज लेयर बनते चले गए और ये फॉसिल्स को बनाते हैं। तो जब भी वहां पे डिगिंग वाली प्रोसेस होती है, जब भी हम उसे खुदाई करके निकालते हैं, देन वी हैव टू गेट द फॉसिल्स फ्रॉम द सॉइल पोर्शंस, ओके। सो नाउ बाय द एंड ऑफ fossils we have to also see the human beings are generally related with the fossil terms. Why? Because the most of the human beings fossils are generally found in the beneath the soil, their bones, their teeth also can be easily found in the soil portion. By this most of the archaeologists and many more scientists are generally get these parts and observe how the study of evolution takes place of human beings. Okay, so firstly I want to tell you that evolutions in human beings is a very drastic changes. इनमें जो evolutions होते गए वो बहुत drastic changes से होते गए, मतलब इनमें evolutions बार बार होता गया। पहले इंसान अलग थे, उनके ancestors अलग थे, पूर्वज अलग थे, then we have seen that so many changes has been occurred in the disasters of human beings. The most important, all human beings belong to the same species. जितने भी human beings होते हैं वो सब same species को belong करते हैं। The species name is Homo sapiens, okay, उस species का नाम है Homo sapiens and Homo sapiens is the scientific name of human beings, okay। Most important, write down because so many times the questions may be asked for 1 marks in your board exam. What is the scientific name of human beings? That is called Homo sapiens. बहुत सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जितने भी स्पीसीज हैं दैट इज कॉल्ड होमो सेपियंस एंड होमो सेपियंस ऑल्दो देयर मेनी रेसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, होमो सेपियंस तो हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के रेसेस बहुत है। रेसेस मतलब ये नहीं कि ह्यूमन बीइंग्स वहां पे रेस कर रहे हैं, इट मींस देयर इज अ वैरायटी एंड देयर इज अ वेरिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वहां पे वेरिएशंस बहुत ज्यादा है एंड दैट्स रेसेस इंडिकेट द वेरिएशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स but they belong to the only one species and that is called Homo sapiens, okay। Now coming to the next part, we have to discuss a very little amount of evolution in human beings. First, the human beings are generally they originated in Africa. First time of the history of human evolution start from the Africa and after that some of the ancestor means कुछ पूर्वज left Africa, ओके, सम ऑफ द एंसेस्टर उनके जो पूर्वज थे उन्होंने अफ्रीका को छोड़ा एंड माइग्रेटेड टू वेस्ट एशिया, उसके बाद वो वेस्ट एशिया चले गए, वेस्ट एशिया के बाद सेंट्रल एशिया। सो दे हैव टू चेंज देयर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द पैसेज ऑफ टाइम। जैसा जैसा समय बीतते गया वो अपने आप को चेंज करते गए एंड देयर आर सो मेनी रेसेस आर जनरली फाउंड एंड दीज आर कॉल्ड द ह्यूमंस इवोल्यूशंस। इसमें ह्यूमन इवोल्यूशंस में आया, जैसे फॉर एग्जांपल दे आर ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में थे वो रहे वहां पे कुछ दिनों तक, दे हैव टू सर्वाइव देयर एंड दे आल्सो प्रोड्यूस देयर ओन फैमिली, ओन प्रोजेनी आल्सो, वहां पे उनकी जनसंख्या हुई, उनके पूर्वज जो हुए उनको छोड़ के कहीं सेंट्रल अफ्रीका में शिफ्ट हो गए, देन दे हैव टू सेट अप देयर फैमिली आल्सो, वहां पे भी उनकी प्रजाति बनी। उसके बाद लेफ्ट अमेरिका को उन्होंने, अमेरिका को छोड़ के उन्होंने वेस्ट एशिया में चले गए, वेस्ट एशिया में वो कुछ दिन रहे। ऐसे करते करते जो ह्यूमंस के जो रेसेस थे वो धीरे धीरे एक्सपेंड होते गए और ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे बड़ा चेंजेस हमको देखने को मिला। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन सिस्टम, ओके। सो एट लास्ट वी हैव टू डिस्कस दैट हाउ द स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन कैन बी पॉसिबल। हम ह्यूमन इवोल्यूशन के प्रोसेस को कैसे समझ सकते हैं? सो फर्स्टली वी हैव टू टेक द बाय डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स को डिटेक्ट करके, फॉसिल्स को देख कर कि हम बता सकते हैं कि ये फॉसिल्स किसका है और ये फॉसिल्स कितने सालों तक इस सॉइल के अंदर रहा है, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, उस फॉसिल्स का टाइम डेटिंग, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कार्बन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एंड सेकंड डिटरमाइनिंग ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएनए सीक्वेंस व्हिच इज फाउंड इन द फॉसिल्स। अगर फॉसिल्स में ह्यूमन बींग्स का डीएनए है तो सो दैट वी कैन फाइंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस सेपरेट एंड वी चेक द ह्यूमंस इवोल्यूशंस जनरली टेक्स प्लेस बाय द फॉसिल्स,
ओके, फॉसिल्स की स्टडी करके हम इस सारी चीजों को चेक कर सकते हैं. हाउ द ह्यूमन इवोल्यूशन जनरली टेक्स प्लेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन एंड हाउ मेनी इवोल्यूशंस एंड हाउ मेनी रेसेस आर देयर, we can also identify it. And we have to also discuss how the ancestors are generally responsible for producing their progeny from time to time, and they are also responsible for producing the generation by generation, and they are the only responsible for creating the more progeny and more childs and more their offspring in all over the world. That's why the human evolutions are generally increasing day by day, and we also get the different idea regarding the human evolutions. Okay, so this is all about the hereditary and evolution. Till then, whatever I have taught you, you all have to revise it. If you have any doubt, you can ask me. Thank you, students.